Namaskar students, this video for class 10th lesson number 9 forest and wildlife resources. In previous video we have studied about the classification forest, deforestation and impact of deforestation. In this video we will study the remedies for forest conservation. Forest को हमारे देश के जंगलों को हमको कैसे बचाना है and it is very necessary. So let's start. Total there are 9 topics, 9 points in these short notes. So listen carefully and learn also this topic. So first, the research should be carried out for the option of the wood. So that's why we can save our tree from the cuttings. Research होने चाहिए कि जिसकी वजह से हमको वुड के ऑप्शन में कुछ दूसरा कोई इस प्रकार का कोई हमको ऐसा सिस्टम हमको प्राप्त हो. So that's why we can save our trees and our forest. Whenever the trees are cutting for the development, the new trees should be grown that area for that particular region. विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, रोड रास्ते और कंस्ट्रक्शंस के लिए हम जितने भी ट्री काटते हैं, so we should grow the new trees. The new trees should be grown by the public also and by the government also for the conservation of the forest. The second point, some factories and some industries need the raw material, and this raw material comes from the forest. The different parts of the wood and the different trees. So this raw material, so because of the raw material, the forest and the woods are cutting in the forest. So on that basis, the new trees and afforestation program should be carried out by that particular institution, by the government also and by the public also. कि जितना भी रॉ मटेरियल हमको फॉरेस्ट से प्राप्त होता है तो उतना ही हमको वहां पे अफॉरेस्ट्रेशन, वहां पे हमको इतने ही पेड़ लगाने चाहिए. एंड द फॉरेस्ट आर कटिंग अंडर द नेम ऑफ द इको टूरिज्म. दैट शुड बी स्टॉप्ड अंडर द नेम ऑफ द इको टूरिज्म. इको टूरिज्म के नाम पे, टूरिज्म के डेवलपमेंट के नाम पे, क्योंकि वो भी एक हमारा इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है टूरिज्म को डेवलप करना. लेकिन कुछ संस्था या तो कोई प्रकार के इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन है, अंडर द नेम ऑफ द इको टूरिज्म, द फॉरेस्ट द कटिंग वेरी हैपेजेडली, बहुत ही उसको बुरी तरीके से जो फॉरेस्ट है वो कटिंग करते हैं. सो वी शुड टेक केयर इन दिस मैटर कि टूरिज्म के नाम पर जो भी जंगलें कटते हैं, जो भी इस प्रकार का जो नुकसान होता है, सो वी शुड, द गवर्नमेंट शुड बी टेकन द स्ट्रिक्ट एक्शन regarding about that types of the matter. Third is very important, the public awareness should be in our country for the conservation of the forest. लोगों की awareness बहुत ही जरूरी है, because it is said the result of the democracy is responsible to the public. लोकशाही का जो भी रिजल्ट आता है उसके जवाबदार हम ही है, इस देश की जनता है. So the public awareness should be in our people, in our citizen of our country. लोगों की जागरूकता होनी चाहिए कि what is the importance of the forest. Forest कितने importance है, which things we are get from the forest. The important things that we are getting from the nature, and that is the oxygen. And only the forest and only the trees can give us the oxygen naturally. So the forests are very important in the eco cycle. The forest resources, the trees are very important. और एक बहुत ही important है, if we will save the trees will save us. So that's why the public awareness is very necessary. लोग जागरूकता, लोगों की, जनता की जागरूकता, it is very important for the conservation of the forest. Otherwise whatever you rules made, how many types of the rules made by the government, it is not effective. But when the public awareness should be done, these things very easily. So public awareness is very important for the forest conservation. The next, the school syllabus program also they included these types of the topic, and you have also studied from, I think you are studying these types of the topic from the primary or the pre-primary level.
स्पेशली फॉर द प्राइमरी लेवल, कि पेड़ को बचाना है, जंगलों को बचाना है हमको, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. सो दिस टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम्स, दिस टाइप्स ऑफ द टॉपिक should be learnt in our syllabus, should be taught in our syllabus, in school level program, in school syllabus program, in college syllabus program. क्योंकि ये जो बच्चे जो पढ़ते हैं तो बचपन से उनके अंदर एक आदत पड़ जाए, उनको इस प्रकार की जागरूकता आ जाए कि what is the importance of the trees. So at the school level program, the school level syllabus program, in the school syllabus, just like we are learning this topic, and this topic also in the 9th standard, was also in the 8th standard also, and primary also. So the syllabus is very, these types of the syllabus is very important to affect mind of the child. So these types of the topics should be included in school syllabus program and also the college syllabus program. Next, the social forestry program and the agroforestry program. These types of the program should be done by the public and by the government also. ऐसे प्रोग्राम उनके द्वारा होने चाहिए, बार बार ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, लैंग्वेज, ये सबके नाम पर अपनी अपनी इंस्टीट्यूशन है, अपने अपने ग्रुप है, और ये सारे जो ग्रुप है वो आए दिन फंक्शन करते रहते हैं. बट वी शुड मेक अ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन. समाज को जागरूक होके एक सामाजिक रूप से एक वनीकरण प्रोग्राम होना चाहिए, एक अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम होना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, एग्रो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम. दिस टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम should be done, and it must be that is carried out by the public also and by the government also for the forest conservation. The alternative option also should be, we should find the alternative option of the forest of the wood. For example, solar energy, wind energy, geothermal energy, tidal energy, these types of the different types of the energy, and that we can say these all are the alternative options of the forest, the alternative options of the food. जैसे हम एक चीज बार बार अगर यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो उसके ऑप्शन में हमको दूसरा हमारा जो रिसर्च है वो बहुत ही हमको तेज करना पड़ेगा. रिसर्च शुड बी कैरिड आउट, अल्टरनेटिव ऑप्शन शुड बी कैरिड आउट ऑन to save our forest, to save our wood, to save our trees from the Indian forest. So these are also the forest conservation topic. We should use these all the things very sparingly. Sparingly मतलब बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, करकसर पूर्वक, जब जरूरियात हो तभी उसका यूज करना. That is sparingly, that is world special for मतलब जिसको बोलते हैं कंजूसाई नहीं करना, जिसको बोलते हैं कि भाई सोच समझ के उसको यूज करना. तो दिस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स are very valuable forest products. So we should use these types of forest products and wood very sparingly. And the forest fire is also a big problem for the forest conservation program. Jungle ki aag, and there are two types of the forest fire. One, that is natural forest fire, and second, that is the man-made forest fire. Natural forest fire, you all of you know, because of the friction of the branches of the trees, and so that's why these types of the fire is coming out in the jungle. Man-made forest fire, because man has often visited in the jungle, the local people are also living in the jungle, in the forest, and that local people doing their activity, कि जैसे आग जलाना, जैसे खाना पकाने के लिए, या तो पानी गर्म करने के लिए, वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, एंड देन आफ्टर वो उसको अच्छी तरीके से उसको बुझाते नहीं है. सो दैट्स व्हाई द फॉरेस्ट फायर इज हैपन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट. सो दिस टाइप्स ऑफ द वी शुड कंट्रोल. जैसे आप बार बार जैसे न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते रहते हैं कि अमेरिका और कैलिफोर्निया के जंगलों के अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत होता है, फॉरेस्ट फायर. सो वी शुड कंट्रोल दिस टाइप्स ऑफ द कैलामिटीज, फॉरेस्ट फायर. बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर ट्रीज तो डिस्ट्रॉय होते ही है, एंड बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर द एनिमल्स
and the domestic animals, the wild animals are also killing and are also destroyed due to this forest fire. So we should control on the forest fire, and we should make actions to these types of the activity should not be that is done in our forest. Religious places programs, you all of you know the religious places program in our country is very often time to time that is come in our country. For example कि जैसे अभी चलते हुए कहीं पे जाना, रिलीजियस कोई मंदिर है, जैसे हर बार जैसे गुजरात के अंदर अगर देखे तो अंबाजी मंदिर, वहां पे सब चलते जाते हैं। यहाँ पे दिवाली के टाइम पे गिरनार की लोग परिक्रमा करते हैं, गिरनार फॉरेस्ट के जंगलों के अंदर परिक्रमा करते हैं, या तो कोई भी रिलीजियस प्लेसेस, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, दैट टाइप्स ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस द पीपल ऑफन विजिटेड, चल के जंगलों में जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द विजिटिंग द फॉरेस्ट इज लिटर, गंदगी वहां पे फैलती है, क्योंकि इंसान जहां पे जाता है वहां पे प्लास्टिक का यूज करता है और बहुत सारी वहां पे गंदगी होती है। सो during these types of the transportation, during these types of the activity, the religious place visiting activity by the human, we should control this and litter, and we should not do any kind of the litter, and litter should be clear. And if these things is not done, so the jungles, the forests are polluted due to these types of the activity. So this is also the point regarding about the forest conservations. The last point is the demarcated and reserved of the pasture land. Demarcated and reserved pasture land to grazing the animals, to grazing activity. जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, उनके लिए एक जैसे बोलते हैं गौचर की भूमि, तो उसके लिए एक रिजर्व्ड होना चाहिए, एक मार्केशन लैंड होना चाहिए। So these are different types of the point, these are the different types of the remedies, solution for conservation of the forest. जंगलों को बचाना है तो हमको ये जो 9 points है, so we should do these 9 points in our country for the conservation and the preservations of the forest. This topic is also very important for your examination. The next topic is wildlife diversity. And this topic, the forest topic and the regarding about the conservation remedies and classification, that is over. Now we will study the wildlife and the diversity of the wildlife. And I think in the 9th standard you have studied regarding about the wildlife diversity, the different types of the wildlife in our country. You all of you know total there are 15 lakhs different types of the species, birds, animals, wild animals, domestic animals, 15 lakhs types of the species in all over the world. 15 लाख की प्रजातियां है, 15 लाख एनिमल्स नहीं है, 15 लाख की प्रजातियां है, मतलब एक प्रजाति के अंदर लाखों करोड़ों एनिमल्स, ऐसे 15 lakhs types of the species in all over the world. And among them in India 81,251 species in India on the point of view of biodiversity point of view. So the India ranks 12th in all over the world in the biodiversity. In the 6th standard that is written the 6th in the 9th standard it is written the 6th rank in all over the world. In the 10th standard textbook that is written the 12th rank in all over the world. You should follow this data, the 12th rank in all over the world. Different types of the species and animals from the African jungle, from the Asian the Asian continent's forest, these types of the animals found in our country also. For example, the African giraffe, the European wolf, and the wild goat, Kashmiri deer, elephants. These types of the animals are found in the Southeast Asia and Africa also, and these species found in our India. So it is a very special biodiversity of our country of India. Different types of the animals of our Indian country. You have studied this topic in 9th standard also. Different types of the animal. For example, black buck, one horn rhino,
that is a special beauty of wildlife beauty of our India. The rhino, the deer, musk deer, एक एनिमल है दैट इज मस्क डियर, जिसको हम बोलते हैं कि एक ऐसा प्रकार का जो हिरन के जो एक खुशबू उसके अंदर होती है, एक फ्रेगनेंट होती है, और दैट इज बिकॉज ऑफ देयर फ्रेगनेंस दे आर द किल्ड. So this is the musk deer. The different types of the snakes, the different types of the birds, peacock, bustard, flamingo, etc. These all are the beauty. These all are the wildlife beauty of our country. So it is very special of our country. The snow leopard, कश्मीर के अंदर बर्फ के अंदर जो रहता है वो लेपर्ड जो है, that is also the speciality of our India. The red panda and the lion and tiger species, both species only found in our country, that is a speciality. शेर और मतलब शेर और जो बाघ है, जो लायन एंड टाइगर, these both are the species found in country in India only. पूरे विश्व के अंदर ये दोनों प्रजाति एक साथ, अलग अलग देशों के अंदर होते हैं, लायन होता है, टाइगर होता है, लेकिन एक साथ दोनों की प्रजाति सिर्फ भारत के ही अंदर पाई गई है. So this is the speciality of wildlife, speciality of our country. Different types of the birds and animals are also there. For example, birds के लिए in our Gujarat, the Nal Sarovar, the sanctuary in our Gujarat, the famous bird sanctuary, the migratory birds, the different types of the birds in the winter come from the different continent and the different countries. ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, अलग अलग देशों से बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो ये विजिटिंग करते हैं. स्पेशली फॉर दैट द रीजन इज द नल सरोवर. आई थिंक यू हैव विजिटेड दिस प्लेस, द नल सरोवर इन अवर गुजरात. एंड सेकंड प्लेस दैट इज द कियोलादेव नेशनल पार्क, दैट इज आल्सो नोन एज द भरतपुर बर्ड सेंचुरी, एंड इट इज सिचुएटेड इन द राजस्थान. सो दिस बोथ प्लेस आर द फेमस फॉर द बर्ड सेंचुरी. द सी टर्टल्स, the laying their eggs on the sandy soil of the Odisha coastal boundary. It is also the speciality कि sandy soil जो होती है कि रेती वाली जो जमीन होती है, वहां पे जो मिट्टी होती है, वहां पे ये जो eggs वहां पे रखते हैं. Different types of the snakes, python, king cobra, different types of the snakes, and different types of these types of the snakes also found in our country. And these snakes, python, king cobra found in the south rainforest, South India, and in the South India there is a rainforest type of the region, they found the different types of the snakes. So these are about the very beauty and very unique wildlife of our India. In next video we will study about the destructions of the wildlife. It is about वाइल्ड लाइफ किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है और उसके रीजन क्या है, उसके बचाने के लिए उपाय क्या है हमारे पास. दिस ऑल दिस थिंग बिकॉज इट इज वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी in our country. So some animals are the extinction, some animals are the in category of the verge of extinction. So all this topic regarding about their reason for the destructions of wildlife and why this wildlife is destroyed, these all things we will study in our next video. Thank you.